Let's further discuss integration by substitution. We know that if we have x cube dx, then its integration is power plus 1 upon power plus 1, which gives us x to the power 4 upon 4. But suppose instead of giving us x cube dx, they have given us something like this: 4x plus 3 whole cube dx. 4x plus 3 whole cube dx. Now if you integrate it in this form, 4x plus 3 power plus 1 upon power plus 1, then this thing is wrong. What went wrong with this? Look here. This is x. This is x. This is also x. These things, they should be same. This is x, then this should also be x. But in this example, this is x, whereas this whole thing is 4x plus 3. This and this, these two are not same. This thing and this thing, they are not same, and therefore we cannot use integration in this form. अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो जैसी चीज यहां हो वही यहां हो. क्या किया जाए कि इस तरह का एक फंक्शन हम डेवलप कर पाए इस सेटअप में, उस चीज को देखना है आपको इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में. इतना वर्ड आप नोट करेंगे एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, इसी तरह से हाईलाइट करते हुए चीजों को विद डिफरेंट कलर. ना अगर मुझे इस चीज को इंटीग्रेट करना है which is 4x plus 3 whole cube dx, और रिक्वायरमेंट थी जो यहां है वही यहां हो, तो हमने एक ट्रिक यूज की. लेट्स से t is 4x plus 3. कोई जरूरी नहीं आप t लें, आप y ले सकते हैं, आप u ले सकते हैं, आप w ले सकते हैं. नॉर्मली लोग t लेते हैं, इसलिए हमने भी t यूज किया हुआ है. Integration by substitution. What does it mean? It means that you are substituting 4x plus 3, you are replacing 4x plus 3 with this new variable t. इतना करने के बाद जो immediate next step है वो ये है, dt upon dx. Differentiate this t. Now you're not differentiating t, you're basically differentiating 4x plus 3. मीन्स आप ये कर रहे हैं. And therefore I said it doesn't matter what you take t or u or w or y, it doesn't matter, because you are differentiating what? 4x plus 3. अब हम डिफरेंशिएशन जानते हैं. अगर किसी ने डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ है, आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए पहले डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर्स पर कमांड करें एंड देन कम टू दीज टॉपिक्स.
This is 4x plus 3. Its differentiation is 4 into 1 plus 0. x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, आइसोलेटेड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. ये क्या लिखा हुआ है? This is 4, and from this you can see that dx is dt divided by 4. dx इसको इधर मूव किया, 4 डिनोमिनेटर में मूव किया, and dx becomes dt divided by 4. Look at the advantage. ऐसा करने के बाद ये जो पूरा ब्रैकेट था 4x plus 3, 4x plus 3, this is what p q. साथ में कौन है? dx. What is dx? dt divided by 4. dt divided by 4. अब पावर फंक्शन में हमने इंटीग्रेशन को किस तरह से यूज किया है? जो चीज यहां हो वही यहां हो. This and this they should be same. वही हो रहा है, and therefore integration is what? Power plus 1 upon power plus 1, और ये 4 पहले से है. ये रहा हमारा इंटीग्रेशन. And finally t. What is t? 4x plus 3. t is 4x plus 3 to the power of 4 divided by 4 and 4, 16. That completes the integration. इस स्टेप में क्या प्रॉब्लम थी? इस स्टेप में प्रॉब्लम ये थी कि जो चीज ये है वो ये नहीं है. How did we overcome this problem? By replacing 4x plus 3 with a new variable which is t. ऐसा करते ही with the help of differentiation हम इस तरह के सेटअप पर पहुंच गए. And what is this setup? You know, x to the power n dx, its integration is x to the power n plus 1 upon n plus 1. क्या है ये सेटअप? अगर यहां x है तो यहां भी x होना चाहिए, अगर यहां t है तो यहां भी t होना चाहिए. सिंस अब आप इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं. नोट डाउन दिस स्टेप पर वीडियो पॉज करना, इस पूरी चीज को नोट करना. इसी पार्ट को फिर से देखते हैं एक दूसरे फंक्शन के साथ. cos x dx, इसका इंटीग्रेशन था sin x. cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x. cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है? sin x. अब suppose somebody gave us cos of 4x plus 3 dx. cos of 4x plus 3 dx, और आपने इसका इंटीग्रेशन इस तरह से मेंशन किया sin 4x plus 3. then this is wrong. क्या गड़बड़ है? सेम चीज. this is what? x. this is also x. These two things, they must be same. Now look here. This is 4x plus 3 and this is x. This part and this part, these two parts are not same. And therefore, you cannot integrate like this. तो अगर ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया वही चीज फिर से रिपीट करते हैं. यहां तक इसको नोट करना, एग्जैक्टली द सेम मैनर. अब अगर मुझे
cos 4x plus 3 dx, इस चीज को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन says take t as 4x plus 3, 4x plus 3, that is t, and now dt upon dx is 4. Differentiation of x is 1, that of t 3 is 0. That gives us dx as dt divided by 4. dx as dt divided by 4. Now, with the help of this substitution, हमारा जो इंटीग्रेशन है अब उसकी शक्ल क्या बनेगी देखो, cos 4x plus 3. Cos, what is 4x plus 3? 4x plus 3 is t. Write down t. What is dx? dt by 4. Write down dt by 4. Now, क्या requirement थी? Requirement थी this and this. They should be same. That requirement is fulfilled in this example now. This is t and this is also t, and therefore integration is sine of t. X, 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 t, t, t divided by 4. Now what is t? Replace t back with the x part, and that t is what? 4x plus 3. 4x plus 3 whole divided by 4. That's how you can integrate these functions with the help of integration by substitution. यहाँ पर pause करके इस पूरे एग्जाम्पल को नोट करना. And now अब बार बार अगर हमें इसी तरह के फंक्शन मिलेंगे और हम ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते रहें तो अननेसेसरली कैलकुलेशन टाइम बढ़ जाएगा. अभी तक हमने क्या किया हुआ है, अब उस चीज को इस फॉर्मेट से समझना. वी आर ट्राइंग टू डेवलप स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर these types of integrations always. थोड़ी देर में बात क्लियर हो जाएगी क्या बोल रहे हैं. Suppose we have to integrate something like this: ax plus b to the power n dx. ax plus b to the power n dx. a, b, n, these are constant numbers. And as you know that n should not be minus 1. हम जिस पावर फॉर्मूले को डिस्कस करना चाहते हैं उसमें आपको पता है n माइनस 1 नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? पिछले लेक्चर्स में आपने देखा हुआ है. डायरेक्ट इंटीग्रेशन अलाउड नहीं है. डायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब आप ये नहीं कर सकते. You cannot do this. ax plus b to the power n plus 1 whole divided by n plus 1. This step is not correct. And why it is not correct? This part and this part, they are not same. Not same. If they are not same, तो हमने क्या करना है? हमने बोला t is ax plus b. t is ax plus b. That gives us dt upon dx equals to a x plus 0, which is 8. Differentiation of x is 1. That of b is 0. That gives us a, which means dx is dt divided by a. dx is dt divided by a. That means हमारा इंटीग्रेशन अब ये बना हुआ है.
ax plus b is t to the power n multiplied by dx, which is dt upon a, dt upon a. Its integration is t to the power n plus 1 divided by n plus 1 and this a which is already present. Now replace t with ax plus b. That makes it ax plus b to the power n plus 1 divided by n plus 1 divided by a. Now look at the trick part. ट्रिक क्या बनकर आया कि जिस तरह से आप इंटीग्रेट करते रहे हो वैसे ही करो. आप इसको पूरा पावर फंक्शन की तरह से इंटीग्रेट करो, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1. एंड स्टेप क्या होगा, जो भी x का कोएफिशिएंट है उस x के कोएफिशिएंट से पूरी चीज को डिवाइड कर दो. x का कोएफिशिएंट क्या है, a, डिवाइड कर दिया. क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो चीज यहां क्लियर है. dx becomes dt upon a और ये जो a है ये प्रेजेंट होता है हमारे पास as an extra term, and therefore from now on these types of integrations can be done in just one line if you remember the standard formula. What I am saying is something like this. यहां तक पॉज करके नोट करना है. Suppose somebody gave us cos of 5x plus 7 dx और हमारे लिए इसका इंटीग्रेशन एक लाइन का है. cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन. राइट डाउन साइन 5x plus 7 whole divided by coefficient of x, which is what, 5, x of 5. Let's take another example. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx. हमें पता है ये इंटीग्रेशन हुआ करता था माइनस ऑफ कॉस एक्स. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस. साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस कॉस. लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा इंटीग्रेट दिस पार्ट, साइन ऑफ 5 माइनस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos of 5 minus 2x whole divided by, look, coefficient of x is not 2, coefficient of x is what, minus of 2, divide the whole thing with what, minus 2. That's how you can integrate this thing. That means अब हम इस तरह के इंटीग्रेशंस के लिए इंटीग्रेशन जो भी इस फॉर्मेट में होंगे, किस तरह के फॉर्मेट में होंगे, if you have been given something like this, ax plus b to the power n dx, then you can see that integration is ax plus b to the power n plus 1 whole divided by n plus 1 divided by coefficient of x, which is a. क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स नहीं भूलनी है. Requirements ये हैं a, b, n. These things are constant numbers and your power n should not be minus 1. That's a requirement. You will remember it like this. Look, cos of ax plus b, cos of ax plus b dx, its integration is what, sine of ax plus b whole divided by coefficient of x, which is what, a. We can use all these formats. You just need to remember one thing, that power of x
pay special attention to this thing. In this bracket, which is ax plus b, every time we differentiated it, you saw that this x upon differentiation becomes 1. Which means what? क्या ध्यान रखना, इस x का पावर जब भी आप इस ट्रिक को यूज करेंगे should be 1. इस x का पावर inside should be 1. You cannot use something like this. Cos a x square plus b dx, and if you write the answer like this, that this is sine ax square plus b whole divided by coefficient of x square a, then this is wrong. This is not allowed. What is the important part? In ax plus b, you can write this as a statement. In ax plus b, power of x should be 1. इस पूरे के ऊपर यहां जो n है, अब ये पावर फॉर्मूला है, वो कुछ भी चलेगा, provided you fulfill these requirements. But inside ax plus b, your x should remain what? Power of x should remain what? 1. फिर से let's take some more examples जिससे कि ये चीज और clear हो जाए. And you should write down everything the way I presented in this lecture. Let's recall this function 1 upon x dx, which is x to the power minus 1 dx, and you can see that power is minus 1, and therefore we cannot use that power formula. इस function का एक special difference integration था, and everybody knows that was log of x base e. जिनको log का आइडिया नहीं है, log पर वीडियो लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं. This thing in short is called ln x. Now, ये जो फॉर्मेट है 1 upon x dx is x to the power minus 1 dx, which upon integration becomes log x base e. In short, natural log और ln x. अब अगर हमें फंक्शन इस तरह से दिया गया dx upon ax plus b, this should be ax plus b, then इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log of ax plus b base e, this is called base e, whole thing divided by coefficient of x, which is a. As long as this thing is x to the power 1 multiplied by some constant number plus some other constant number, look ये बना हुआ है 1 upon x. इस x का पावर 1 है, इसलिए इस x का पावर भी 1 होगा. अगर इस x के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर है, वो कंप्लीट इंटीग्रेशन कर लीजिए जैसा आपने सीखा है अभी तक. डिवाइड द होल थिंग विद दैट कोएफिशिएंट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Before we move to the next example, यहाँ पर इसमें कई लोग इस तरह की बेवकूफियां करते हैं. dx upon 4x plus 3 whole square, and then they write like this: log 4x plus 3 divided by coefficient of x. 4 स्क्वायर है, उठाकर स्क्वायर कर दिया. तो नॉर्मली अपन इस तरह का मजाक नहीं करते हैं इंटीग्रेशन में कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहें. दिस इज नॉट करेक्ट. एंड व्हाई इट्स नॉट करेक्ट, यू कैन सी कि अब ये 1 अपॉन x फॉर्मेट नहीं है. क्या है ये फॉर्मेट? ये फॉर्मेट ये बना हुआ है. दिस इज
4x plus 3 to the power minus 2 dx। इसकी शक्ल किससे मिल रही है? इसकी शक्ल इससे मिल रही है ax plus b to the power n dx। n is -2। अगर n -1 होता है, जो इसके पिछले वाले एग्जांपल्स में था, तब हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग दिस इज -2, इसलिए यहां पर हमने जो इंटीग्रेशन सीखा हुआ है, दैट इंटीग्रेशन इज व्हाट? 4x plus 3 4x plus 3 power plus 1 upon power plus 1 divided by coefficient of x, which is 4। That's the answer। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है। अगर आप अभी इस तरह के पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान मत होना। एक बार आपने 40, 50, 60 एग्जाम्पल्स के आसपास कर लिए इंटीग्रेशन के, कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा आपका और आपको दिखने लगेगा ये चीजें बड़ा बच्चा टाइप चीजें हैं। अभी आपको थोड़ा सा पेन फील हो सकता है, नॉर्मली होता है, लेकिन ये ज्यादा दिनों का नहीं है, आ जाएगा समझ में, प्रोवाइडेड आप एफर्ट्स डालें। अपने आप कोई चीज दिमाग के अंदर घुस जाए, ऐसा जादू अपने पास नहीं है। नाउ we have done the step of integration e to the power x dx। इसका क्या इंटीग्रेशन था? e to the power x, सबसे इजी वाला। पावर फॉर्मूला यहां यूज नहीं होता, क्योंकि जो पावर x है पावर n की तरह से कांस्टेंट नहीं है। जब हमारे पास पावर n होती है तो वो कांस्टेंट होती है। ये पावर x है and x is a variable। Now e to the power x dx is e to the power x, but suppose you get something like this, e to the power ax plus b dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e to the power ax plus b whole divided by coefficient of x, what is that? A। Same trick again and again you can use it, provided power of x in ax plus b is 1। Remember the statement, power of x in ax plus b should be 1। किसी ने अपने को इस तरह से दिया, dx upon e to the power x 4x minus 5 dx upon e to the power 4x minus 5। अब क्या करना है? ये डिनोमिनेटर में है, x डिनोमिनेटर में नहीं है, e to the power 4x minus 5 डिनोमिनेटर में है, तो पहले आप इस e को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। एंड आई होप यू हैव दिस मच नॉलेज ऑफ शिफ्टिंग समथिंग फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। जैसे ये ऊपर शिफ्ट होगा, पावर क्या हो जाएगी हमारी? नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। e to the power 4x minus 5, नेगेटिव होते ही minus 4x, and negative of negative becomes what? Plus। अब इसकी शक्ल किससे मिल रही है? e to the power ax plus b। क्या होगा इंटीग्रेशन? ये रहा इंटीग्रेशन, e to the power minus 4x plus 5 whole divided by coefficient of x, which is what? -4, which is what? -4। इतना इजी है इंटीग्रेट करना। Note down this।